Assalamu alaikum, my dear students. This is your English teacher, Miss Mehek Fatma, and this is our lecture number 6 of English literature. We will learn today that what is a novel, what is a fable, what is in the story, moral of the story, and explanation of chapter 1. What is a novel? A novel is simply a fictional story that is told in narrative form and that is book length. नॉवेल एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी को कहते हैं जो एक बुक लेंथ की हो और नरेटिव फॉर्म में हो, प्रोज फॉर्म में हो, यानी चैप्टर वाइज हो। फिक्शनल स्टोरी क्या होती है? फिक्शनल स्टोरी इज स्पेशली डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। फिक्शनल स्टोरी आपकी इमेजिनेशन को, जो स्टोरी आप अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्शनल स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, The Wizard of Oz, Oliver Twist, etc. What is a fable? A short story, typically with animals as characters, conveying a moral, life lessons. Fable एक ऐसी छोटी छोटी कहानियों को कहते हैं, स्टोरीज को कहते हैं कि जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर्स हों और वो कोई ना कोई मॉरल, कोई ना कोई लाइफ लेसन प्रेजेंट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, द एंट एंड द ग्रास हॉपर, द फॉक्स एंड द क्रो, एक्सेट्रा। So yes, our novel is full of fables, folk tales around the world. I hope your novels are in your hand, and if it's not, then come on, take out it from your backpack. This novel includes different fables and short stories with morals and lessons. First chapter which we are going to study, that is The Pied Piper of Hamelin. Part 1, that is Rats. Before starting our topic, we must know the moral of the story, that is promises must always be fulfilled. हमेशा promises फुलफिल करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। Okay students, before starting reading, I hope your books are in front of you, and if it's not, then kindly take out your books and read with me. Your first chapter is The Pied Piper of Hamelin. Part 1. Topic is Rats. Let's read it together. Promises are very important. It is easy to make a promise about something. For example, I promise to wash the dishes, Mom, or I won't tell your secret, I promise. It is not always easy to keep that promise. Promises बहुत necessary होते हैं, ज़रूरी होते हैं, important होते हैं, लेकिन promise करना किसी से बहुत easy है। For example, आपके पास बुक में एग्जाम्पल दी है, I promise to wash dishes, Mom, or I won't tell your secret, I promise. Promise means
वादा, जब आप किसी से वादा करते हैं, you have to fulfill that promise. वादा करना बहुत आसान है. Promises, it's easy to make, but it's not always easy to keep that promise. लेकिन हमेशा promises को fulfill करना इतना easy नहीं होता. But you must do your best to keep it. लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने promise को fulfill करें. You must wash those dishes. You must not tell the secret to anyone. If you break your promise, something bad usually happens. This is the story of a broken promise. जब भी आप किसी से प्रॉमिस करें, कोशिश करें कि उस प्रॉमिस को पूरा करें. और अगर आप प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, देन कुछ ना कुछ बुरा होता है. This story which we are going to read is about a broken promise. This story happened a long time ago. There was a town called Hamelin. It was a beautiful place. There were pretty houses with red roofs and flower gardens. There was a big marketplace and busy shops. And there was a wide river with stone bridge. इस पैराग्राफ में story is telling us that where the story happened. There is one town, Hamelin, that is very beautiful. There were very pretty houses. There were big marketplaces, shops, and there was a wide river with stone bridge. एक ऐसी जगह की स्टोरी है जिसे हैमलिन कहा जाता है और बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी, बहुत अच्छे अच्छे घर वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स वहाँ मौजूद हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत बड़ा रिवर वहाँ मौजूद है विद अ स्टोन ब्रिज. फॉर मेनी ईयर्स हैमलिन was a good place to live. कई सालों से हैमलिन रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है. And then the rats came. Where did the rats come from? Why did they choose Hamelin? Nobody knows. But they came. Soon the town was full of them. हैमलिन बहुत अच्छी जगह थी रहने के लिए, मगर फिर वहाँ रैट्स आ गए. कहाँ से आए? हैमलिन में ही क्यों आए? कोई भी ये बात नहीं जानता था. Rats, they came into the houses and shops. They found their way into cupboards. They made holes in bags of food. They made their nests everywhere. The rats were big and strong. They had sharp claws and long yellow teeth. They were not afraid of anything or anybody. Nobody was safe. Dogs and cats ran away when they saw them. Rats इतने हो चुके थे वहाँ पे कि वो घरों में आ जाया करते थे, कबर्ड्स में चले जाते थे, किसी भी खाने के शॉपर में, किसी भी खाने के बैग में चले जाते थे. हर जगह उन्होंने अपने नेस्ट बनाए हुए थे, अपने घर बनाए हुए थे. Rats were big and strong. They had a sharp claws and long yellow teeth.
आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि दे वर वेरी मच बैड। वो बहुत ख़तरनाक और दिखने में डरावनी थे। किसी चीज़ से नहीं डरते थे, लेकिन वहाँ की कोई चीज़ अब रैट से सेफ नहीं थी। डॉग्स और कैट्स तक वहाँ से जा चुके थे। Here we end our part 1 of this story. Hope you all understand. आप सब इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, और अगर समझ ना आए तो एक दफ़ा फिर से खुद से पढ़िएगा, तो वर्ड्स आर वेरी इजी, आप समझ जाएंगे। Home task. This is your home task, but before starting home task, you know instructions? Yes, let me remind it. Do your literature work in your English literature copy. Do your work with pencil and blue color. Make your index properly. Your first task is make a pictorial title page of chapter 1, that is the Pied Piper of Hamelin part 1. Then write the given difficult words in your copy after making title page. Do the given question answers in your copy after difficult words. सबसे पहले आप लोग एक पिक्टोरियल टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर 1 का। उसके बाद दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स you are going to write. Difficult words are promises, important, something, secret, dishes, happens, broken, Hamelin, roofs, wide river, stone bridge, choose, cupboards, nest, clothes, afraid. Question answers. Where did the story happen? The story happened in a town called Hamelin. It was a beautiful place. There were pretty houses with red roofs and flower gardens. Write a short description about rats. The rats were big and strong. They had sharp claws and long yellow teeth. They were not afraid of anything or anybody. Question number 3 is, what promise did the child make with his mother? The child made promise to wash dishes. Thank you, students. As we study today about promises, so there is one quote that knowledge without action is meaningless. आज हमने promises के बारे में पढ़ा, तो ये कोट आपकी हेल्प कर सकता है इस तरह कि नॉलेज बिना किसी एक्शन के कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। जब तक आप किसी काम को नहीं करेंगे, तब तक आपकी नॉलेज उस बारे में कोई फ़ायदेमंद नहीं है। If you like this video, so like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon.